Hello everyone. In the previous lecture of mine, I have discussed about the Newton's law of motion and the parameters such as the velocity, acceleration, force, uh, which are responsible for for motion of a body. Now we will discuss in this particular class about the applications of Newton's law of motion. In the last class, we have mm, discussed about the three laws of motion, and we came to know that what is inertia, how and what is actually we got the definition of force, we got the formula of force. Force is nothing but it is actually the rate of change of momentum. We came to know from that, and we came to know that about the nature of the forces that for every action there is an equal and opposite reaction. In fact, that is the fact due to which all the internal forces in the nature must cancel each other. The Newton's law, the third law of motion, directly states that. In fact, so now, in this lecture, we will discuss about the application of Newton's law of motion. Uh, Among the various applications of Newton's law of motion, one of the most popular applications of Newton's law of motion is the law of conservation of momentum, or the law of conservation of linear momentum. You know one thing that we've studied about the linear momentum. What is linear momentum? It's the product of the mass and velocity of a body, or we can say it is a product of the mass and linear velocity of a body. But what the conservation of linear momentum states, or there is a law which is known as the conservation of linear momentum. That is, the linear momentum is actually conserved. So, what does it actually mean? It means something like this, that if there is a system or isolated system, you can say there is an isolated system, and if the total external force acting on the isolated system is zero, in that case, the total momentum of the system will be constant in that sense. That is what we call the conservation of uh, linear momentum. This is known as the law of conservation of linear momentum. That if the net uh, external force applied on the system is zero, then the total momentum of the system is always constant. So, and the thing is something like that. Let me share on board with you all. A minute. Uh, I'm sharing a whiteboard with you all. I hope everyone of you can see this. Now, so the conservation, as I say, the conservation of okay, conservation of linear momentum. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अगर जीरो होता है, तो उस हिसाब से टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम जीरो होगा. अगर मान लो कि एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. मान लो कि एक सिस्टम है जिस सिस्टम का एन नंबर ऑफ बॉडीज है. ये एन नंबर ऑफ बॉडीज को मिला के एक सिस्टम बना है, और ये कम्प्लीटली एक ये सारे पार्टिकल्स को मिला के, या बहुत सारे बॉडीज को मिला के एक कंप्लीट सिस्टम बना है, और ये सिस्टम एज अ होल अब मूव कर रहा है. तो हर बॉडी का खुद का एक मोमेंटम होगा. तो सपोज मान लो कि पहला वाला बॉडी है, ये बॉडी वन, ये बॉडी टू है, ये बॉडी थ्री है, ये बॉडी आई है सपोज. तो हर बॉडी का मोमेंटम पी वन, दूसरे बॉडी का मोमेंटम पी टू, तीसरे बॉडी का मोमेंटम पी थ्री. तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, सबका एडिशन होगा.
तो टोटल मोमेंटम ऑफ पी होता है, तो पी विल बी P1 प्लस P2 प्लस Pn, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो अभी हम लोग को न्यूटन लॉ से क्या पता चलता है कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर कैलकुलस नोटेशन से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखना चाहे, so we will write to be that it is the time derivative of the linear momentum. Force क्या है? Force is the time derivative of the linear momentum. तो F vector equals to dp/dt। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर ये है मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स, ये हो गया मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स। अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स अगर जीरो होता है किसी सिस्टम के लिए, मान लो एफ नेट जो हुआ, if this becomes zero, then this implies straight away that dp/dt equals to zero. If dp/dt equals to zero, then अभी ये शायद मैथमेटिक्स में हम लोग सब पढ़े कि अगर कोई भी एक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डेफिनेटली वो दैट फंक्शन कांस्टेंट ओवर दैट parameter. That is, if dp/dt equals to zero, then p is constant over t. So I can write p equals to constant. तो यहाँ से क्या पता चला, पी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पी क्या है, पी टोटल लीनियर मोमेंट ऑफ द सिस्टम है, पी मतलब है P1 प्लस P2 प्लस P3 और Pn। तो ये फुल सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अभी इसका बहुत ही इजीएस्ट और बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं फायरिंग ऑफ ए गन, फायरिंग ऑफ ए आई मीन टू से फायरिंग ऑफ अ बुलेट, सॉरी फायरिंग ऑफ अ बुलेट। तो क्या है कि हम लोग जब कोई पिस्टल से गोली चलाते हैं, तो क्या है देखोगे उसमें क्या होता है कि वो जो बुलेट निकलता है जब पिस्टल से, तो पिस्टल थोड़ा सा पीछे मूव करता है। इनफैक्ट इट इज सेम फॉर अ मशीन गन और एनी अदर गन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर फायरिंग ऑफ ए बुलेट फ्रॉम पिस्टल, अगर मैं ये कर सकती हूँ, इसका क्या है कि देखो मेरा जो फोर्स है, अच्छा सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहला है कि जब बिफोर फायरिंग, जब मैंने गोली हम लोगों ने नहीं चलाया था, तब सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, गोली चलाने से पहले बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम मतलब कितना था, ये हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। तो दैट विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एवरीथिंग वाज फिक्स, ना बुलेट मूव कर रहा था ना किसी मूव कर रहा था, तो टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज। अभी देखो, अभी मान लो कि एक अगर गन का या पिस्टल का, अगर मान लो पिस्टल का जो मास है, पिस्टल मास अगर मेरा एम होता है, ऑब्वियसली, और बुलेट का मास, इसको हम लोग स्मॉल एल पकड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पिस्टल का मास बहुत ज्यादा होगा बुलेट का। लाइक वाइज पिस्टल का पीछे मूव करने का, जब दैट इज कॉल्ड रिकॉइल स्पीड और रिकॉइल वेलोसिटी, तो पीछे मूव करने का अगर वेलोसिटी या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, पिस्टल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, वो अगर कैपिटल डी देते हैं, और बुलेट वेलोसिटी ऑफ
मूविंग या अगर स्मॉल भी होता है तो उस हिसाब से अभी आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना होगा? एम जी प्लस स्मॉल एन आफ्टर फायरिंग। अभी क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लेकिन इस सिस्टम में काम नहीं किया है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लेकिन सिस्टम के बाहर से, मतलब ये जो पिस्टल है ये एज अ होल एक सिस्टम है। अब बाहर से कोई भी अप्लाइड फोर्स यहाँ पे काम नहीं किया है। तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन दिस केस। तो एज अ रिजल्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोग ये बोल सकते हैं, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि in that case the total momentum before firing and total momentum after firing will be same. So in that case mv mv plus mv must be equal to zero, because this comes from the law of conservation of linear momentum. So from this we get mv equals to minus mv, और velocity of recoil अगर मुझे निकालना है तो that will be minus small m by capital M into v. So this is the velocity of recoil ऑफ द गन ऑफ द पिस्टल। अभी क्या है कि ये जो कैपिटल पी है यह ये देखो दैट इज इक्वल टू सब माइनस एम बाई एम इंटू बी। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो रिकॉयल है, ये जो बुलेट जिस तरफ निकलेगा ये जो पिस्टल है वो उसके ऑपोजिट में मूव करेगा। मतलब जो रिकॉयल होगा ऑलवेज द रिकॉयल विल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ द बुलेट। जैसे बुलेट सामने निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो जो पिस्टल है वो पीछे मूव करेगा। सो दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट पर्टिकुलर फैक्ट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली इस रेशियो के बारे में अगर हम लोग थोड़ा देखें, दिस रेशियो, दिस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, ये जो रेशियो है, इस रेशियो, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्मॉल एन इज द मास ऑफ द बुलेट एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द होल पिस्टल और गन। तो ऑब्वियसली दिस रेशियो विल बी वेरी वेरी लेस देन वन। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी जो होगा, कैपिटल वी विल बी वेरी वेरी लेस देन स्मॉल वी। क्योंकि बुलेट जितना भी जल्दी फायर क्यों ना हो, गन का जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। इसीलिए क्या है कि वो थोड़ा सा पीछे मूव करेगा, नॉट मोर देन दैट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सब करेंगे बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। इसके सिवा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के। वी विल डिस्कस इट इवेंचुअली।
सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी आर टेलिंग अ 30 kg shell flying at 48 meter per second, flying at 48 meter per second. When it explodes, when explodes, the one part, it's one part of 18 kg. It's one part of 18 kg. Stop while the remaining part flies on. Find the velocity of ejection. Find the velocity of the ejection. तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देखना है। यहाँ पे क्या बोला कि 30 kg का सेल है जो कि 48 मीटर पर सेकंड में फ्लाई कर रहा था, उसके बाद एक एक्सप्लोड। आफ्टर एक्सप्लोजन सपोज वो दो पार्ट में बट गया, तो एक पार्ट था वो उसका 18 kg का जो कि स्टॉप कर गया, जो रिमेनिंग पार्ट था वो फ्लाई कर गया। तो ना वो जो रिमेनिंग पार्ट था उसका मास हम लोग को जानना है, उसका वेलोसिटी हम लोग को पता लगाना है। तो उसको उसका वेलोसिटी पता लगाना है ना। फर्स्ट पार्ट था जिसका मास दे दिया है, सेकंड पार्ट का मास नहीं दिया है। सपोज इट वाज अ सेल, दिस वाज अ सेल। नाउ आफ्टर एक्सप्लोजन दो पार्ट में ये स्प्लिट किया गया, ये मान लो दिस वाज अ सेल, इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 18 kg और इसका वेलोसिटी हम लोग को पता है क्योंकि स्टॉप, तो इसका वेलोसिटी है जीरो, जब v1 बोलते हैं तो इसका वेलोसिटी हो गया जीरो। और दूसरा तो क्या है कि ये वाला मूव कर रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है। अब ये टोटल सेल था 30 kg का, ये टोटल सेल था 30 kg का। तो अगर ये 18 kg का होगा तो डेफिनेटली दिस विल बी ऑफ 12 kg। अभी इसका हम लोग को वेलोसिटी मान लो थी, यही हम लोग को निकालना है। 12 kg पार्ट पे वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो जो ये जो 30 kg का जो सेल है ये जब मूव कर रहा था, तो बिफोर इट एक्सप्लोडेड, बिफोर इट एक्सप्लोडेड, तो उसका मास ऑफ द सेल m1 मान लो, या हम लोग उसको बोले कैपिटल है, तो दैट इज 30 kg सिंपल। और उसका वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी था वेलोसिटी ऑफ द सेल, कैपिटल भी मान लें, वो क्या था 48 मीटर पर सेकंड। अभी वो क्या है कि एक्सप्लोड कर गया, ये बिफोर एक्सप्लोजन, ये था बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर बिफोर एक्सप्लोजन। अभी क्या है नेक्स्ट, आफ्टर एक्सप्लोजन सिचुएशन क्या था वो देखना है। आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो रहा है, आफ्टर एक्सप्लोजन देखो हम लोग एक बार देखते हैं कि आफ्टर एक्सप्लोजन, लेकिन बिफोर एक्सप्लोजन इसका स्पीड भी था 48 मीटर पर सेकेंड। अभी आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो रहा है कि एक पार्ट जो है 18 kg का वो रुक जा रहा है कहीं पे,
और दूसरा पार्ट जो है 12 kg का वो मूव करेगा। ना इस ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? just a second। तो अभी क्या है कि आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो रहा है, वेलोसिटी हम लोग को कितना है वो देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो पार्ट था वो 18 kg, वो इट गॉट एक्चुअली स्टॉप। तो आफ्टर एक्सप्लोजन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 18 इंटू मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, 18 टू 0। ये फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम हो गया। सेकंड पार्ट का मोमेंटम क्या होगा, उसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है, इट्स 8 v2। और उसका वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है, लेकिन v2 और उसका मास है 2 के 12 kg। तो आई कैन राइट 12 into v2। दिस इज दी एक मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन, दोनों ही केसेस में टोटल मोमेंटम विल बी द सेम और इट इज अ कांस्टेंट। तो क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है। व्हेन द shell is exploded or when the shell got burst, तो एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन एक इंटरनल फोर्स का क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ये दिस कंप्लीटली इज हैपनिंग ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, है ना? तो अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो इन दैट केस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो सकता है, therefore 18 into 0 plus 12 into v2, that is equals to, बिफोर एक्सप्रेशन कितना हो सकता है, कैपिटल एम कैपिटल बी, दैट इज कैपिटल एम बी। तो इसका मतलब क्या, 18 इंटू जीरो तो हो जाएगा जीरो हम लोग, प्लस 12 इंटू वी टू, कैपिटल एम था 30 और कैपिटल बी था 48। तो यहाँ से वी टू कितना निकलेगा, 30 इंटू 48/12। तो कम टू नो द 12। तो यहाँ से हम लोग निकल सकता है वी टू इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट। ये हो गया हम लोग का सेकंड पार्ट का वेलोसिटी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे हम लोग और भी हम डिस्कस करेंगे gradually, or eventually we will discuss some more terms on law of conservation of linear momentum. Lekin before moving to that, in the last class we have studied about फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉब्लम। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम समथिंग लाइक दैट। सपोज problem number two, and suppose the from the roof uh, mass like this is attached. Suppose this mass be m1, m1 के संग connected है दूसरा mass which is m2, और m2 के संग connected है तीसरा mass that is m3 और m। अभी क्या है कि ये टोटल नीचे वेट काम कर रहा है, इन तीनों मास का एक वेट नीचे काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली सिंस इट इज हैंगिंग डाउन, so obviously these things will experience some tension, and the tension will is always opposite in the upward direction. So this one will be T1, so this one will be T2, and this one will be T3. Now my problem is to find out the
वैल्यूज ऑफ T1, T2 एंड T3. T1, T2, T3 कितना होगा ये हम लोग को निकालना है. इफ द masses are given something like that, the masses are M1 equals to 5 kg, M2 equals to 2 kg, and M3 equals to 3 kg. These are the masses given. ये masses दे दिया गया है. So I need to find out the values of T1, T2, T3. T1 equals to, T2 equals to, और T3 equals to कितना होगा. So in this case, just in order to solve this problem, we have to follow the technique. अच्छा, यहाँ पे बोल दिया गया है कि must take g equals to 9.8 मीटर per second square. The acceleration to gravity या value उन्होंने दे दिया. The question are given the masses, the acceleration to the value of the acceleration to gravity. We need to find out T1, T2, and T3, the tensions on the spring. So अभी क्या है, since the and the one more thing they are given, that they have given two situations. In the first situation, the whole system is stationary. System is stationary. If in that case, what will be T1, T2, T3? And in the second case, whole system is moving upward with acceleration A equals to 2 meter per second square. Okay. In such case, solution क्या होगा? Solution will be, देखो किस तरह का प्रॉब्लम से हम लोग करेंगे. तो क्या है कि द होल सिस्टम इज स्टेशनरी. सो इन दैट केस, जो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. इन कलर, दिस इज द सीलिंग, और यहाँ से ये तीनों मासेस इस तरह अटैच हो, नीचे की तरफ जो काम कर रहे हैं. द टेंशन इज T3, this is T2, this is T1. This is M1 mass, this is M2 mass, and this is M3 mass. ये हो गया. अभी क्या है कि suppose if I talk about T1, so this T1 is hence the system is stationary. System is stationary. Since the system is stationary, so this T1 mass will be balanced by the total weight acting on the system at this particular point. Suppose M into G, the capital M is the total weight of the whole system. यहाँ पे capital N क्या है? तो capital N equals to nothing but it is M1 plus M2 plus M3. Okay. So in this case, then T1 will be nothing but it will be M1 plus M2 plus M3 into G. So T1 will be the value, if I use the values, that 5 plus 2 plus 3 into 9.8. So T1 will be, if I add this up, 5 to 7 to 10, then into 9.8, so it will be 98 meters. So यहाँ पे क्या है कि देखो the T1 is the topmost tension, and it is, since it is acting at the top point, so this is balanced by the total weight of the system. Now the system is stationary, so I get as in this thing. Next, if I go to T2, now how T2 will be calculated? T2 equals to what? Since system is stationary, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि T2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो T2 के केस में क्या है कि
the tension is acting at this point, and now this tension, since the system is stationary, system में बोल रहा हूँ system stationary है, इसीलिए ये जो tension जो इस point में काम कर रहा है, this is balanced by these two forces, the weight of these two bodies. No, I'm sorry, the T2 is balanced by the weight of these two bodies. Okay, T2. So in this case, I can write T2 equals to simply M2 plus M3 into G, that is equals to 2 plus 3 into 9.8, that is equals to 5 into 9.8, which is 49 newton. And obviously T3, in case of T3, if I talk about T3, then it is quite obvious that this, which is acting at this particular point, T3, this point is answer. This is balanced by simply the mass M3. So in this case, I can write T3 equals to M3G, which is equals to 3 into 9.8, that is equals to 29.4 Newton. तो when the system is stationary, यहाँ पे क्या है देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम स्टेशनरी था, सिस्टम स्टेशनरी रहने की वजह से we got some extra facilities. Since the system is not moving, so we are not bothering about the acceleration of the system. So for that reason, यहाँ पे क्या है कि by applying the simply Newton's third law, that for every action there is equal and opposite reaction, so that if T1 if the weight of the body is the action, then obviously T1, T2, or T3 are the corresponding reactions. So if I use the Newton's third law of motion, using Newton's third law of motion, we can calculate the all the tension forces. But when we come to the second part, when we come to the second part, the whole picture again. Now, when the whole system is moving upward with the acceleration a, and which is given by that is 2 meter per second square, is given that a equals to then a equals to 2 meters per second square. The whole system is moving upward with 2 meters per second square. In such case, and in this case, we see that the acceleration due to gravity g is acting downward, that is 9.8 meter per second square, which is simply acting downward. So in this case, the equation of motion will be something like this, that I can write that this m1 plus m3, m2 plus m3 into a, that is the acceleration of the whole system, that must be equal to t1 minus m1 plus m2 plus m3 into g. In the previous case, when the former case, when the acceleration of the system was zero, when the system was stationary at that particular point, so this part was zero.
So that's why T1 was equal to M1 plus M2 plus M3 into G. But now when there is an acceleration, so obviously, so this part will not be equal to zero. As a result, T1 will not be equal to M1 plus M2 plus M3 into G. Rather, T1 minus M1 plus M2 plus M3 into G must be equal to something. So this is the concept of this problem. So if I go to the if I once again go to the previous part, so here we can see that T1 जो था वो equal to M1 plus M2 plus M3 हम लोग इसलिए लिख पाए थे क्योंकि T1 minus M1 plus M2 plus M3 equal to zero होता है in this case. The force is exactly balancing P1 is exactly balancing mg, capital Mg. So the forces are exactly the action and reaction forces are exactly balancing each other. But in this case, when the system is actually moving, so T1 is unable to balance the weight of the body. तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे इसीलिए T1 the difference of T1 and the weight of the body is generating some resultant reaction or generating some resultant force. That force is equal to the total mass times the acceleration of the body. So now this is my equation of motion. Now we know that the values of m1 plus m2 plus m3, that is 5 into well, 5 plus 2 plus 3 multiplied by 2 equals to T1 minus 5 plus 2 plus 3 into 9.8. So in this case, T1 can be calculated easily. So this is 10 into 2. So 20 equals to T1 into 98. So T1 equals to 20 by 98 meters. Uh, uh, Answer, I mistake here. That mistake, sorry, that will be minus 98 because 5 plus 2 plus 3 that is 10, 98. So T1 will be 20 plus 98, that is 118 Newton. So in this case, the tension force T1 will be 118 Newton. तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि टेंशन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है. इससे पहले सिर्फ भी 98 न्यूटन था जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, लेकिन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड तो टेंशन बहुत ज्यादा है क्योंकि क्या है कि इसलिए टेंशन ज्यादा होना जरूरी है बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड. सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे लेकिन इस मास को खींच के ऊपर उठाने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को टेंशन फोर्स जरूरी है. So that's why in this case the tension force is increasing. Next, if I talk about the if we need to find out T2, I mean the concept is same. So now these two parts are important because T2 is acting at this particular point. So these two parts are important. So in the next case, we can write the equation of motion something like that. So since the whole system is moving with the acceleration 2 meters per second square, so it will be in the second case it will be m2 plus m3 into A equals to T2 minus M2 plus M3 into G, which eventually gives 2 plus 3 into 2 equals to T2 minus 2 plus 3 into 9.8. As a result, we can equals to T2 minus 49. So eventually T2 will be equals to 59 Newton. लेकिन अभी अगर हम लोग थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस मेरा जो टेंशन फोर्स है वो एग्जैक्टली दिस ब्लू डॉट इस पॉइंट पे काम कर रहा है. तो इन दिस केस ओनली दिस पार्ट इज आई मस्ट बी कंसर्न अबाउट दिस पार्ट ओनली. ओके, तो इस पार्ट में अगर कंसर्न होते हैं तो इन दिस केस my equation of motion will be something like this. So it is m3 into a equals to t3 minus m3 into g. So the mass m3, so it is 3 into 2 equals to t3 minus 3 into 9.8. So यहाँ से
D3 equals to 6 plus 9.8 into 3, so 9.8 into 3, that is 29.4. It will be 29.4. So इससे आएगा हम मान लो होगा 35.4 न्यूटन. So D3 will be 35.4 न्यूटन. तो यहाँ पे हम लोग को अब समझ में आया कि अगर इस the system is stationary, then क्या होता है कि the equation of motion is simply like that. F12 plus F21 equals to 0. That is action plus reaction equals to 0. लेकिन अगर now if the system becomes something like this, कि there is an acceleration of the system, then in that case, it will the tension force will not be able to simply balance the weight of the body. In that case, the difference in the tension and the weight of the body will give a resultant force, and that resultant force will, and actually that resultant force will be equal to mass times the acceleration of the system. So this is one of the example of free body system and Newton's law of motion. Okay. So इसी तरह अगर we eventually if we go to the next part of our problem, so if we go to the next part of our problem, but we, suppose I have a system something like this. Now this is mass M1 and this is mass M2. अभी क्या है कि हम लोग now these two masses are connected by a string, or now I am pulling the mass with a force F, and due to which the acceleration is acting in this direction, the acceleration is obviously in this direction. Now, if the question is such that M1, the given data that M1 equals to 10 kg and M2 equals to 20 kg, and of the one thing I must mention that in this case we have neglected the friction. यहाँ पे लेकिन along the surface कोई friction हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे क्वेश्चन में, because अभी तक हम लोग फ्रिक्शन पार्ट डिस्कस नहीं किए हैं. सो आई एम नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन इन दिस केस. सो इन दिस पार्ट द वी कैन कंसीडर द प्लेन टू बी फ्रिक्शनलेस. सो अब अगर फ्रिक्शनलेस कोई रीजन है तो इस जगह पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एफ, दैट इज 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो नाउ माय प्रॉब्लम विल बी m1 plus m2 into a equals to f, because when I am moving, when I am pulling this total mass, so in this direction, तो क्या है कि if the tension force is acting in particular direction, the M2 mass is actually pulling the M1 mass, so the tension is acting in this direction due to M2. The M2 is pulling M1, so M2 M1 को pull कर रहा है, तो पहला जो tension force है वो इस तरफ काम कर रहा है. अभी जब ये इस तरफ move कर रहा है, तो at the same time M1 is also pulling M2, because always there is an equal and opposite direction. So M1 is pulling M2 with a tension force T. So in this case, both the T's are actually getting balanced or cancelled out. So as a result, because the T's are in opposite direction, so in this case, we can write M1 plus M2 into A equals to F. So A will be F by M1 plus M2, that is equals to 500 by 10 plus 20. So it will be 500 by 30, so it will be 50 by 3 meter per second. Now the acceleration will be
50 by 3 meter per second. So if the acceleration is this, then what will be the tension on the system? So if I talk about the tension force, फर्स्ट टेंशन फोर्स एम टू जो एम वन को पुल कर रहा है उसके लिए जो टेंशन फोर्स है वो अगर टी वन होता है सो इन दिस केस माई इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी लाइक दैट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टी वन जो है टी वन इज एक्चुअली टी वन इज गेटिंग बैलेंस बाई एफ टेंशन फोर्स राइट। सेकेंड एंड द एम वन is experiencing a tension T2. Now, if F is the total force on the body, then I can write that M1 into P2 equals to F. Simply we can write that M1 into P2 that is equals to F because यहाँ पे ये P2 मूव कर रहा है just a second and wait a minute it was a mistake sorry। तो अगर हम लोग को टेंशन निकल गया है इट इज 50/3। नाउ अभी क्या है कि M1 जो है वो ए एक्सीलरेशन लेके मूव कर रहा है जस्ट लाइक M2। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि M1 into A that is equals to T2 the tension on M1 mass। तो उस हिसाब से T2 will be the mass M1 that is 10 kg into 50/3 and eventually it will be 500/3 Newton by 3 Newton। And if I talk about T2, the or if I talk about the tension T1 which is acting on M2, so M2 into T1, if I write that M2 into T1 is equals to, again I have a mistake, sorry, M2 into A equals to T1. So M2 into A equals to T1, so T1 will be M2 that is 20 kg into 50/3. So my God, it is getting huge, it is 1000 by 3 Newton. So what I am getting that the tensions T2 and T1 in the what I have said at the beginning that they are T1 and T2 the both the tensions are balancing each other। If the tensions would have balanced each other, then the whole system would have been stationary, राइट। तो ये जो टेंशन है अगर दोनों टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है तो कभी ये दोनों मास मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज M1 जो है वो M2 को खींच रहा है और M2 जो है वो M1 को खींच रहा है। तो जितना भी फोर्स अप्लाई करे अगर टेंशन बैलेंस हो गया तो वो सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह खींचते हैं वेयर आई एम पुटिंग द ऑब्जेक्ट व्हिच इज as given in the diagram I pull the object in this particular fashion। so तब क्या होगा कि obviously the tensions are different, tension different होना जरूरी है unless otherwise the object will not move। and टेंशन का डिफरेंस देखो अगर मास जब वो मास M1 है M1 के ऊपर 500/3 न्यूटन टेंशन फोर्स काम कर रहा है whereas M2 मास के ऊपर 1000/3 न्यूटन टेंशन फोर्स काम कर रहा है। सर तीन टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी so which readily defines that T1 is not equal to T2 in this case और T1 not equal to T2 है इसीलिए the whole object is actually moving। now there is a third type of problem जिसको हम लोग fully problem बोलते हैं। वो fully problem हम लोग once again we will discuss about the fully problem। so in this case suppose there is a table like this और क्या है कि इस टेबल के ऊपर
Now M1 and M2. Okay, this is M1 and this is M2 and the smooth pulley is connected at this point. Now, अभी वन थिंग इन दिस केस वी हैव टू नोटिस एक चीज हम लोग को यहाँ पे सीखना जरूरी है कि टेंशन जो होता है इस पर्टिकुलर केसेस में व्हेन द पुलिस कनेक्टेड टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस पुलिस के डायरेक्शन में टेंशन हमेशा काम करता है सो इन दिस केस द T1 इज एक्टिंग अलोंग द पुलिस इन दिस केस T2 इज एक्टिंग अलोंग द पुलिस so अगर if this is the situation then M1 equals to 200 grams the question they have given. And again, the pulley and the tables are also again frictionless. तो यहाँ पे टेबल और पुली दोनों ही frictionless है. So if it is a frictionless system, so हम लोग we don't have to bother about the friction now. And M2 equals to 100 grams. Now the question is कि ये जो object है M2 with what acceleration this body M2 will move and what will be the tension on the spring. So अगर acceleration A है, so we need to find out A, we need to find out T1, we need to find out T2. तो ये अगर मेरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो दो मासेस है M1 एंड M2. M1 और M2 के करस्पॉन्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम क्या होंगे. तो आई एम ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम. There is an object. यहाँ पे जो मास है M1 मास इज प्लेस नाउ. सपोज आप प्लेस M1 मास. अभी यहाँ पे देखो M1 मास के ऊपर जो है वो टेंशन किस तरफ काम कर रहा है. M1 मास के ऊपर टेंशन की जो है वो इस तरफ काम कर रहा है. ओके. और मोशन जो है उसका वो भी इसी तरफ है. बॉडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. और क्या है नीचे की तरफ जो है वेट काम कर रहा है mg और M1 g ज्यादा M1 इंटू जी. और ऊपर की तरफ जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है रिएक्शन से. सिमिलरली इफ आई ड्रॉ द सिस्टम फॉर इसी तरह क्या है कि हम लोग एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे फॉर एन सेकेंड मास M2. सेकेंड जो मास है M2.
Now this was the mass M1. Now this will be the mass M2. So M2 mass के लिए our free body diagram will be M2G. यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स किस तरफ काम कर रहा है ना, M2G is acting downward यहाँ पे, that is okay. No normal reaction in this case. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है टेंशन फोर्स is acting along this direction which is equal to the normal reaction of M2, or no forces along this direction. There is no forces which is acting along this direction. And the whole system is now moving downward. So this is my free body diagram, and the whole system is now moving in this case downward, M2. So if this is my free body diagram, so from where I will start, so that यहाँ पे M2G is actually since the body is moving, so I can write and the body is moving downward. So हम लोग ये second free body diagram से हम लोग इक्वेशन में सेट कर सकते हैं कि M2G minus T equals to M2A, because the body is moving downward. So difference between M2G and T is equal to the movement of the body. So M2G minus T equals to M2 into A. This is the first equation. This is my first equation. This is my first equation. And in the second part में हम लोगों को क्या दिखता है कि now the system is moving along this direction. So T is equals to M1 into A. T is equals to M1 into A. So from this first this free body diagram, हम लोगों को क्या मिल रहा है कि T, or you can say that T minus M1A equal to 0, which implies that T equals to M1 into A. So this is equation number 2. Now we know that M1 is 200, M2 equals to 100 and 100. So uh, we need to find out uh, A first in order to calculate. So how will you find out? We use these equations, P equals to M1 into A. And so if I put this, obviously, since it is the same string, it's a one single string. So in both the cases, the tension in this case, the tension must be equal. In this case, T1 is equal to T2. In this case, why T1 is equal to T2? Because यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में ये जब ये ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, so this is moving along the pulley. यहाँ पे लेकिन कोई मास अटैच नहीं, in between this string, the two masses are attached at two extremes, and the whole system is moving with an acceleration downward. So in this case, obviously, I mean, it's definitely true that uh, तो यहाँ पे ये चीज डेफिनेटली ट्रू है कि M2 जो मूव कर रहा है, M2 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, M2 जिसकी वजह से जो कि M1 को खींच रहा है, M2 M1 को खींच रहा है, इसीलिए वो M1 मूव कर रहा है. So that's why ये in this case when I am talking about पुली के केस में हम लोग को हमेशा T1 will be equal to T2. यहाँ पे याद रखना कि it is unlike this problem. That's why I discussed this particular problem. कि यहाँ पे जो था, in this case the two tensions were different because the two tensions acting on two masses were different. और ये क्या है कि दो different directions में काम कर रहे थे. M2 or T1 and T2 were acting in two different directions, and eventually so as a result, and they were acting on two different masses. यहाँ पे जो था कि T1 जो था वो M1 that is the M2 was pulling the mass M1 with the tension T1, and T2 was the tension that is T2 was that particular tension कि M2 M1 was pulling M2 with the tension T2, right? तो यहाँ पे क्या है कि T1 जो टेंशन है वो किस तरह का फोर्स है,
ये M2 जो M1 को अपनी तरफ खींच रहा है, T2 किस तरह का टेंशन फोर्स है, यहाँ पे M1 M2 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे the two tension forces acting on two different masses are also coming from two different masses. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टेंशन फोर्सेस जो है T1 एंड T2, they are coming from two different masses, but they are acting on the pulley in the direction of the pulley. यहाँ पे देखो ये पुली के ऊपर लेकिन काम कर रहे हैं। ओके, तो इन दिस केस T1 must be equal to T2। अगर T1 T2 सेम ना होता तो इन दिस केस लेकिन पुली के केस में ये सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर T1 और T2 सेम नहीं होगा, यहाँ पे जो खिंचाव है जिसको हम लोग बोले इफ द टेंशन आर नॉट इक्वल, देन ये ओवर द पुली कभी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव नहीं करेगा, रादर द पुली विल ब्रेक, रादर द पुली विल ब्रेक। ओके, because it will be unable to withstand the two different tension। ओके, सो इन दिस केसेस, और यही पुली लगाने का इनफैक्ट वी कैन से दैट पुली लगाने का इम्पोर्टेंस भी हम लोग यही बोल सकते हैं कि जस्ट टू मेक द टेंशन इक्वल, पुली लगाने का ये भी एक हम लोग रीजन एज्यूम कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हम लोग इसलिए ही पुली लगाते हैं। नाउ if I use T equals to M1A, M2T minus T equals to M2A, so if I use the equation 2 in equation 1, so my equation will be M2G minus M1A equals to M2A. So this eventually gives M2G equals to M1 plus M2 into A. तो यहाँ से A equals to will be M2 by M1 plus M2 into G। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, तो if I use now if I use the values that is 2 M1 equals to 200, M2 equals to 100, and G equals to, they have given G equals to 9.8, G equals to 9.8 meter per second square। if the, since they have given 9.8, so I'm using it, otherwise अगर 10 दिया रहा है तो हम लोग 10 यूज करेंगे। तो अगर ऐसा हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ से we will get A equals to, we'll get the value A, that will be 326.7 centimeter per second। A will be 326.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसलिए आएगा क्योंकि द masses are in grams, so I am calculating this in centimeter per second। So obviously tension will be simply M1 into A। So we know the value of M1, and if we use 200 grams, so if we use the value of A, so it will be 653.65340 dyne, 65340 dyne। So now we've got the free body diagram problem। तो हम लोग को यहाँ पे previous जो problem था, which was not a pulley system जब नहीं था, तब यहाँ पे क्या हो रहा था कि the I am applying a force on the connected body M1 and into a connected body when they are connected by a spring, and I am applying a force or I am pulling M2। तो M2 को जब हम लोग पुल कर रहे हैं तो क्या है कि जो ये M2 जो है ऑब्वियसली M1 को पुल कर रहा है, तो M1 को जब M2 जब M1 को पुल कर रहा है तो M1 भी M2 को पुल कर रहा है। बट द इन दिस केस द टेंशन आर गेटिंग डिफरेंट। M1 M2 को जितने फोर्स से पुल कर रहा है, दैट टेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम M2 M1 को जितने फोर्स से पुल कर रहा है। तो और इवेंचुअली वी फाउंड दैट ओनली, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वही हो रहा है। बट अगर हम लोग पुली लगाते हैं, when the system is attached, when you use a pulley to the system, सिस्टम में जब पुली लग जाता है तो लेकिन टेंशन इक्वल हो जाता है। हम इसीलिए क्या है कि when the tensions become equal, तो क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को खींचना या मूव करवाना और भी आसान हो जाता है। So that's why this is the importance, that's why in some places we use a pulley। Okay, so this was some of the simple examples of free body diagram problem। Uh, uh, Now, in the next class, we will discuss about the Lamy theorem. But before going to that, so in this lecture we have discussed about the free body diagram problem and the mass pulley system, law of conservation of linear momentum।
In the next class, in my next lecture, we will discuss about the Lannis theorem, and we will do some more problems. Thank you.